हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी एस जसप्रीत। आई होप कि आपने पार्ट फर्स्ट ऑफ JIGL अमेंडमेंट्स देख लिया है एंड आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा। सो आई एम हियर विद पार्ट बी ऑफ JIGL अमेंडमेंट्स फ्रॉम द टॉपिक ऑफ आर्बिट्रेशन। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इस बार के पेपर में जब आर्बिट्रेशन में से क्वेश्चंस आए या नॉर्मली भी ये जो 13 14 15 चैप्टर है, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं बिकॉज दे आर रियली लेंथी। तो अगर आप मेरी मानो तो इस बार के अटेम्प्ट के लिए अगर आप उन चैप्टर्स का ओवरव्यू लेते भी हो वो तो लो, लेकिन उसके साथ अमेंडमेंट जरूर करो बिकॉज स्पेशली ऑफ लेसन 13 इसमें इतनी ज्यादा अमेंडमेंट्स आई हैं दैट देयर आर वेरी हायर चांसेस कि इसमें से क्वेश्चंस भी आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लेसन जो है 13 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन वाले से हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले कुछ चेंजेस हैं वो डायरेक्ट आए हैं, वो अमेंडमेंट्स आई हैं फ्रॉम द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट 2021 से जो आई थी। आर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया promulgated the ordinance 2020 with an objective to ensure that all stakeholder party gets an opportunity to seek unconditional stake of enforcement of arbitral awards where the underlying arbitration agreement or contract or making of arbitral award are induced by fraud or corruption। तो कोई भी फ्रॉड या करप्शन की वजह से अगर कोई भी इंड्यूस किया जाता है आर्बिट्रल अवार्ड, तो उस केस में जो है उन्हें अनकंडीशनल स्टे लेने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अमेंडमेंट्स ऑफ द ऑर्डिनेंस विच प्रिस्क्राइब्स द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड नॉर्म्स आर as given below. It's substituted with the following section। तो ये न्यू अमेंडमेंट्स, क्वालिफिकेशंस एंड accreditations आई हैं। तो इसमें ये हुआ था दैट accordingly the qualifications for appointment as arbitrators which were earlier prescribed in the principal act will now be through the regulations। तो इसका जो impact ये आया कि जो provisions हैं arbitration and conciliation amendment ordinance 2020 की, they were adopted in the principal act by virtue of arbitration and conciliation amendment एक्ट 2021। तो उसमें जो भी चेंजेस आए वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिए हैं और ये जो है ये अमेंडमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया है, बस ये इस चीज में बताया गया है। फर्दर केस लॉज आते हैं। फर्स्ट केस लॉ है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस डिसिटेक्स फर्निशिंग लिमिटेड। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड केस लॉ है, ये डिसाइड हुआ था 13 नवंबर 2019 को। डिटेल्स ये है, फॉर डिसाइडिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 of the Arbitration Act 1996, the court is required to ensure that arbitral dispute exists and has to be prima facie convinced about the genuineness or credibility of the plea and not be too particular about the nature of the plea which necessarily has to be made and established in the substantive proceeding। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, आप देखोगे जैसे केस लॉ शुरू होता है ना वो शुरू में बता देते हैं इसका आंसर क्या है। तो बेसिकली ये इसका डिसीजन का पार्ट है कि उन्होंने बोला कि कोर्ट ने ये चेक करना है फर्स्टली दैट देयर इज एन आर्बिट्रल डिस्प्यूट, देयर इज अ डिस्प्यूट व्हिच कैन बी रेफर्ड टू द आर्बिट्रेशन। सेकेंडली दे शुड बी कन्विंस्ड अबाउट द प्ली, इट शुड बी जेन्युइन, इट शुड बी क्रेडिबल, इट शुडंट बी समथिंग लाइक व्हिच इज वेग और एम्बिगुअस, ऐसा कुछ नहीं, वो बहुत ही जेन्युइन होनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी उसकी चेक करो और ये चेक करो कि डिस्प्यूट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। फैक्ट ऑफ द केस ये थे, जो डिसिटेक्स है जो कि रिस्पोंडेंट है, उसने एक फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी ली थी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से और आग लग गई। ठीक है, जब आग लग गई तो ऑब्वियसली रिस्पोंडेंट इन्फॉर्म द एपेलेंट अबाउट द फायर एंड अबाउट द कंसिक्वेंशियल लॉसेस के क्या क्या हमें नुकसान हुआ। एपेलेंट ने सर्वेयर्स लगा दिए, मेसर्स सीपी मेहता एंड कंपनी। सर्वेयर्स बेसिकली चेक करते हैं कि कितना नुकसान हो, उसके हिसाब से पे करते हैं। तो सर्वेयर जो अपॉइंट हुआ उसने इतना क्लेम निकाला कि इतना ही बस क्लेम है जो आपको दिया जाना चाहिए। रिस्पोंडेंट addressed various letters to the appellant's chairman informing him the financial distress it was facing, requesting for settlement। तो उन्होंने बोला प्लीज जल्दी जल्दी, बिकॉज जब आग लग गई बहुत सारा नुकसान हो गया, ऑब्वियसली फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हुआ, ही नीडेड टू गो फर्दर इन लाइफ, लाइक फर्दर इन बिजनेस। तो ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि भाई मेरा पैसा दे दो, मेरे पैसे दे दो, प्रायोरिटी बेसिस पे दे दो। देन apparently what the appellant did, he appointed a CA to resurvey it। दोबारा से CA लगा दिया। Respondent received an email from the appellant stating that a discharge voucher for the balance amount of the claim was being enclosed। Respondent placed on record total claim he
asked for 15 crores and surveyor approximated 12.93 crores. Respondent stated the basis for arriving the figure of this was not explained by the applicant. He said he didn't told that why was it short. Respondent submitted along the discharge voucher for a full and final settlement for due to the urgent need of funds because he had no option, right? अब उसे तो अपना काम शुरू करना ही है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने जो है full and final settlement अपनी कर ली. Respondent placed on record their objective that the same was signed due to pressure of the respondents and applied to Bombay High Court. Bombay High Court has allowed the decision and क्या appeal में file हुआ था? Then the appellant went to the appeal in the Supreme Court. Supreme Court said that an overall reading of the respondent's application shows its grievance with respect to involuntary nature of the discharge voucher was articulated because वो मजबूर था and he took advantage of that and he had to take the money. The court is conscious of the fact that an application under section 11 subsection 6 in the form of pleading which merely seeks an order of court for appointment of an arbitrator, right? So basically when a pleading comes, they ask for the appointment of arbitrator. The High Court, which is required to ensure that an arbitral dispute exists, has to prima facie convinced about the genuineness or credibility of the plea of caution. They had to check that whether it was genuine or not. It cannot be too particular about the nature of plea, which necessarily has to be made and established in the substantive proceedings. So the Supreme Court opined that the reasoning in the impartial judgment cannot be faulted. The appeal was held to be dismissed without order as to cause. So basically, what is the duty of High Court? They say they need to check that whether an arbitrable dispute exists, that was there. Secondly, they said that they were convinced about the genuineness or credibility of the plea, that the caution was there, that is also fine. They need not check the nature of the plea, right? What is the nature of the plea? That is not to be checked, right? So two things that court should take into account is the genuineness or credibility and that arbitral dispute exists. These two things are important, that arbitral dispute exists and genuineness and credibility. So अगर ये दो चीजें हैं, court has not to check the nature of the plea. That is not their duty, right? To check the nature of the plea is actually not their duty. They need not to be particular about it, right? तो बस ये दो चीजें याद रखनी है कि जब कोर्ट के पास कोई एप्लीकेशन लगती है under section 11 subsection 6, they have to make sure about two things. First, that there is an arbitral dispute, and secondly that they have to check the genuineness or the credibility of the plea. Here it has to be a plea of caution, and they need not go into particular about the nature of the plea, which will be understood in the substantive proceedings only. The next case law is about Brahmani River Pellets Limited versus Kamakachi Industries Limited. So again, this is Supreme Court has decided. So here the Supreme Court has decided that parties are free to agree on the place of arbitration, right? So firstly, I think if you have read the chapter of arbitration, everywhere they say that parties are free to agree. आपस में उन्हें जो ठीक लगता है, जो जगह वहां पे वो जाके arbitration कर सकते हैं. But party autonomy has to be construed in the context of parties choosing a court which has jurisdiction out of the two or more competent courts. देखो, अगर तो वो दोनों आपस में डिस्कस कर लेते हैं तो बहुत अच्छा. But if any party is choosing any court which is outside the jurisdiction of the competent courts, then party autonomy is needed. That means both have to agree on it. Like what did the case said? They said that the appellant entered into an agreement about 40,000 WMT iron pallets. So dispute arose between the parties regarding the price and the payment, and the appellant did not deliver the goods. So the respondent claimed for damages and appellant denied any liability. He said, I will not pay anything. Clause 18 of the agreement was an arbitration clause. Respondent invoked it and appellant did not agree. So basically when a arbitration clauses invoked, they both should agree for the appointment of arbitrator. He did not agree. So the respondent filed the petition before the Madras High Court. The appellant contested the petition challenging the jurisdiction on the ground that the parties have agreed that the seat be Bhubaneswar. So earlier, what was the agreement? That the seat of arbitration would always be Bhubaneswar, but now he has filed a jurisdiction in Madras High Court. The Madras High Court, while impungent, they appointed a former judge of Madras High Court as a sole arbitrator
later, the appellant went to the Supreme Court. So Supreme Court said, what do you mean by court? What is a court? Court is with reference to the subject matter of the suit. In arbitration, when we use the word court, it should always relate to the subject matter. Subject matter of the suit is situated within the arbitral jurisdiction. The parties can agree and confine to one or more if it is within the jurisdiction. But the Supreme Court held the subject matter to identify the court having supervisory control of this. So they say parties are free to agree. This is what we read. But party autonomy has to be construed. When you choose any court outside the jurisdiction, you have to make consensus. आपको एक दूसरे से पूछना पड़ेगा, दोनों yes करेंगे तभी आप कोई और court outside the jurisdiction select कर सकते हो. Supreme Court observed, when parties have agreed to have the venue at Bhubaneswar, Madras High Court erred in assuming the jurisdiction since only Odisha High Court will have the jurisdiction. जब आपने डिसाइड किया कि भुवनेश्वर वेन्यू रहेगा तो आप मद्रास क्यों चले गए, राइट? सो ओनली मद्रास हाईकोर्ट की गलती थी. दे कैन नॉट अज्यूम द जुरिस्डिक्शन. एक्चुअली द करेक्ट जुरिस्डिक्शन राइज विद द ओडिशा हाईकोर्ट. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पार्टी ऑटोनॉमी जो है, वैसे तो पार्टीज फ्री टू अग्री है, लेकिन अगर आप जुरिस्डिक्शन से बाहर जाते हो तो पार्टी ऑटोनॉमी लेनी बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि आपका मन कर रहा है तो आप बाहर जाके कहीं पे भी आर्बिट्रेशन लगा दोगे. दैट इज नॉट देयर, राइट? तो ये इस केस में ये आया था at the end. Then talking about oil and natural gas corporation versus saw pipes limited. So इसमें public policy को कैसे interpret करना है, हालांकि when you read the chapter उसमें public policy को ऐसे ही define किया गया है. They have told this. They say that setting aside application for setting aside the arbitral award, it was decided that in case that public policy should not be interpreted in narrow terms with respect to just Indian laws, it should be interpreted in a way that broadens the public interest. So public policy होता क्या है? पब्लिक पॉलिसी इज नॉट अ पॉलिसी ऑफ अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट. नो, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट डील करती है. इट कनॉट सम मैटर, कुछ भी जो पब्लिक गुड से रिलेट करता है, जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेट करता है. ये जो कॉन्सेप्ट है, इट कम्स दैट व्हाट वुड बी इंजूरियस और हार्मफुल टू द पब्लिक गुड और पब्लिक इंटरेस्ट हैज वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम. सी व्हाट with time everything changes. It must be held for the enforcement of a foreign award would be refused on the ground if it is contrary to public policy, right? So what do you mean by public policy? Contrary to public policy means if it is contrary to fundamental policy of Indian law, or it is contrary to interests of India, or it is contrary to justice or morality. So in chapter also, wherever you study public policy means the fundamental policies of India, the interests of India, or the justice or morality. So if the arbitral tribunal does not dispense justice, a court would be well with its right in upholding the challenge to the award on the ground that its conflict is with the public policy of India. So if anything, anywhere you feel that arbitral tribunal ने justice नहीं किया, आप definitely उनके arbitral award को challenge कर सकते हो कि ये public policy के खिलाफ है. Because public policy किसी government से relate नहीं करती. Public policy हो सकता है जो fundamental policy है इंडिया की, जो interest है इंडिया का, और जो morality and justice को support करती है. अगर कोई भी decision, अगर कोई भी arbitral award आता है जो justice को support नहीं करता है, उसे challenge किया जा सकता है on the basis of public policy, right? Next case law says Union of India versus Om Vajrakhya Construction Company. So in this case, the High Court held, unlike the tribunal's ability to award interest, the court's ability to award costs within the meaning of section 31 is unrestricted, and any agreement between the party that forbids the awarding of costs would be irrelevant unless they do so after a dispute has arisen. So they say that tribunal's ability to award interest, any kind of interest, and the court's ability to award costs, it is always unrestricted, right? They can do it anytime. So, and any agreement, if they between the parties, if they forbid the awarding of costs, right, they forgot that they are not awarding the cost, it would be irrelevant. It's not an important thing unless they do so after a dispute has arisen. If they are doing all these things after the dispute has arisen, that's a separate thing. But if they are doing it before it, right, any agreement is happening before it, then that's not a problem. But if the dispute arises and then you say we'll not be paying anything to each other, that's a problem. Otherwise, the tribunal can actually award any interest. It is always unrestricted, and the court can award any cost. That is always unrestricted, right? But any agreement arises between the parties, it is irrelevant.
Right? It does not make any sense unless they do so after a dispute has already arisen. Then it is relevant, but before that, it is just irrelevant. Next case is BCC Developers and Promoters Limited versus DMRC. In this case, it was observed that just because the appointed arbiters happen to be ex-employees of one of the parties, it does not make them ineligible. So the plea urged by the petitioner seeking appointment of sole arbitrator and disqualification of panel is not maintainable. Basically, the arbitrators were the ex-employees of one of the parties. कैन दे बी डिस्क्वालिफाइड? नो, बिकॉज दे आर द एक्स एम्प्लॉयज. अब क्या रिश्ता उनका, है ना? जो आर्बिट्रेटर है, ठीक है, हम उसे इंडिपेंडेंट बोलते हैं कि वो ऐसा बंदा हो, न्यूट्रल हो, बट हियर दे से इफ दे आर एक्स एम्प्लॉयज तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, उन्हें पैनल से नहीं हटाया जा सकता जस्ट बिकॉज कि वो एक किसी भी एक पार्टी के एक्स एम्प्लॉयज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट इज क्लोरो कंट्रोल्स Private Limited versus Severn Trent Water Purification. They say, okay, in this case, court observed the rule of competence. So what they say, court held that challenge to the existence or validity of the arbitration agreement will not prevent the arbitral tribunal from proceeding with hearing and ruling upon its jurisdiction. So they say, if at any point of time the arbitration agreement itself challenged, right, whether it's existing, whether it's valid or not, because arbitration agreement is which happens in the beginning of the contract, right? In the contract, it's a clause also, it's an agreement, वो भी agreement ही होता है. तो वो अगर challenge हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता arbitral award पे, उसकी proceeding पे. इसका negative effect ये आता है that arbitrators are entitled to be first to determine their jurisdiction, which is later reviewable by court. तो वो अपनी jurisdiction determine कर रहा है और बाद में court decide करेगा कि ये actually ये agreement valid था भी या नहीं, when there is action to enforce or set aside the arbitral award. So when the dispute is not before an arbitral tribunal, the court must also decline the jurisdiction unless the arbitration agreement is patently void, inoperative or incapable. तो सबसे पहली चीज है, आपने ये देखना है, यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि जो arbitration agreement है, ठीक है, वो प्रिवेंट नहीं करता अगर आप उसे चैलेंज कर दोगे कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के काम के साथ कोई इंटरफेरेंस, तो कोई दिक्कत नहीं. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन पहले डिसाइड होती है, फिर बाद में कोर्ट डिसाइड करता है, रिव्यू करता है कि मतलब उसे अगर सेट असाइड करना है, इन्फोर्स करना है, विच इज नॉट करेक्ट. वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है क्योंकि डबल वर्क हो जाता है, पहली चीज. दूसरी चीज, अगर डिस्प्यूट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में नहीं गया तो कोर्ट उसे एंटरटेन नहीं करेगा until and unless ये चीज प्रूव ना हो जाए कि जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है वो एक्चुअली में नहीं इंप्लाई हो सकता या नहीं वॉइड हो गया है, वो वहां पे परफॉर्म नहीं किया जा सकता या वो इनऑपरेटिव है या इनकेपेबल है, देन कोर्ट कैन टेक द jurisdiction, then court can decide for them. तो इस तरीके से ये वाला जो प्रिंसिपल है ऑफ कॉम्पिटेंस ये फॉलो होता है इस केस लॉ में. सो देयर आर टोटल ऑफ 7 केस लॉज इन आर्बिट्रेशन. और अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे और कॉन्सेप्ट्स हैं, अराउंड अबाउट 2 मोर कॉन्सेप्ट्स आर देयर. तो इसीलिए अगर आर्बिट्रेशन के अमेंडमेंट्स भी कर लेते हो इस बार, तो आई थिंक देयर आर चांसेस कि अमेंडमेंट्स में से वो काफी कुछ पूछेंगे. सो दीज आर द केस लॉज. मूविंग अहेड टू अदर कॉन्सेप्ट्स. तो टॉपिक में या बुक में हमने पढ़ा था जो आपकी स्टडी मटीरियल है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन. उसके साथ अब 2 तरीके की आर्बिट्रेशन और आ गई है जिन्हें हम कहते हैं टाइप्स में. फर्स्ट इज एडहॉक आर्बिट्रेशन. एडहॉक आर्बिट्रेशन में कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रादर द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, मोड ऑफ सिलेक्शन, हाउ द आर्बिट्रेशन विल बी कंडक्टेड, इट मे बी डिसाइडेड बाय द पार्टीज. प्रोसीजरल एस्पेक्ट शुड आल्सो बी डिसाइडेड बाय द पार्टीज. तो उसमें कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पार्टी को जिसे आर्बिट्रेटर बनाना है बनाए, जितने भी बनाने हैं बनाओ, जैसे मर्जी करो, जो मर्जी प्रोसीजर करो, दैट इज कॉल्ड एडहॉक आर्बिट्रेशन. राइट, एडहॉक आर्बिट्रेशन में कुछ भी फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होता, अपने आप से पार्टीज अरेंज करें सब कुछ, आर्बिट्रेटर्स बनाए, जो करना है करे और अपने आप से प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स डिसाइड कर ले, उन्हें हम कहते हैं एडहॉक arbitration. Second is domestic. As the name suggests, domestic means when disputes are subject to Indian law and cause of action is entirely based in India. क्योंकि domestic बात हो रही है तो इंडिया में इंडिया के लॉज के अकॉर्डिंग और जो भी डिस्प्यूट है वो बेस है इंडिया में, तो वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है. इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होती है अगर तीनों में से कोई एक चीज हो जाए, एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज इज an individual who's a national or habitually resident in any other country than India. यानी कि पहले या तो वो national ही किसी और country का, या तो वो habitually वहीं पे रहता है. Secondly, body corporate which is incorporated in any country other than India. An association or body corporate whose control, management
whose central management and control is exercised in any country other than India or the government of a foreign country. तो ये चार चीजें हैं, अगर कोई भी एक पार्टी इनमें से कोई एक है तो वो बन जाता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन. तो डोमेस्टिक में तो सिंपल था, इंडियन लॉज फॉलो करने हैं और जो डिस्प्यूट हुई है वो इंडियन बेस्ड डिस्प्यूट होनी चाहिए. यहाँ पे क्या है, चार चीजें, अगर कोई भी दोनों में से एक पार्टी वो इंडिविजुअल जो या तो दूसरी कंट्री का नेशनल है या वहीं पे रहता है. सेकेंडली, अगर तो बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो बाहर ही इनकॉर्पोरेटेड है. थर्डली, अगर वो एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो उसका जो कंट्रोल है वो किसी और कंट्री में. एंड फोर्थली, जो गवर्नमेंट है वो फॉरेन कंट्री की है, तो उस केस में आती है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन. एंड फोर्थ इज इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन. अगर वो किसी एस्टैब्लिश्ड आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन जो मैटर है वो एडमिनिस्टर कर रहा है तो उस केस में वो बन जाती है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशंस यू नीड टू अंडरस्टैंड: एड हॉक, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल. दूसरी चीज आई थी एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रल प्रोसेस. तो आर्बिट्रल प्रोसेस के एसेंशियल्स क्या होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट इज द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन. पार्टीज आर फ्री टू सिलेक्ट कौन सी सीट होगी. वेन्यू, पार्टीज आर फ्री टू सिलेक्ट. आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, दे मे सिलेक्ट एनी इंस्टीट्यूशन जो उन्हें ठीक लगता है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन. लॉ, ऑफकोर्स दे मे बाय अग्रीमेंट चूज एनी लॉ, जिस भी लॉ के अकॉर्डिंग वो चलना चाहते हैं. लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज दे कैन चूज. नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, they are free to determine the number of directors. cost, बस वो even number नहीं होना चाहिए, right? cost ये होता है the court or the arbitral tribunal have the discretion to determine the cost as in whether the costs are payable by one party to another. एक पार्टी दूसरी पार्टी को पे करेगी, टोटल कॉस्ट कितने होंगे और ये कॉस्ट कब पे किए जाएंगे. ये भी इंपॉर्टेंट है. ये है एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रल प्रोसेस. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? स्टेट द एसेंशियल्स ऑफ एन आर्बिट्रल प्रोसेस, तब आपको ये मेंशन करने पड़ेंगे. तो सीट हो गया, वेन्यू, इसके सिर्फ आई बिलीव आप हेडिंग्स लर्न कर लो, अंदर तो आप लिख ही दोगे. सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, लॉ, लैंग्वेज, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स एंड कॉस्ट. तो ये आई थिंक सारी अमेंडमेंट्स में से अगर सबसे ज्यादा अमेंडमेंट किसी में ऐड है या एडिशंस आई है तो इसी चैप्टर में आई है, तो इसे ध्यान से करके जाना. नेक्स्ट इज इंडियन स्टैम्प एक्ट एज पर लेसन 14. सो दिस इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमेंडमेंट्स इन द इंडियन स्टैम्प एक्ट एंड द रूल्स फ्रॉम 1st July 2020 for rationalized collection of mechanism across India for the सिक्योरिटीज मार्केट. तो सिक्योरिटीज मार्केट के लिए उन्होंने एक रैशनलाइज मैकेनिज्म दिया है. इसका इम्पैक्ट क्या है? द सिस्टम विल हेल्प डेवलप इक्विटी मार्केट्स एंड इक्विटी कल्चर along the length and breadth, यानी कि हर जगह पे एक ही तरीके की स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगी. टू अचीव द रैशनलाइजेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी स्ट्रक्चर्स, द अमेंडमेंट्स प्रोवाइड द स्टैम्प ड्यूटी ऑन सेल, ट्रांसफर एंड इशू ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय collecting agents who will then transfer the stamp duty to the state government. So firstly, on every sale, transfer and issue, collect कौन करेगा? state government की collecting agencies होंगी, collecting agents जो वो collect करेंगे और state government को दे देंगे. दूसरी बार, in order of multiple incidences of taxation, बहुत सारे incidents हो रहे हैं, no stamp duty shall be collected on any secondary record of transaction associated and with the transaction on which the depository or stock exchange has been authorized to collect the stamp duty. यानी कि दूसरी बार कुछ भी कोई भी फर्दर ट्रांजैक्शन होती है तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट नहीं करनी अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हो रहे हैं तो, राइट? इन द एक्सटेंट सिनेरियो स्टैम्प ड्यूटी वाज पेएबल बाय बोथ सेलर एंड बायर, वेयर एज न्यू में क्या है? इट इज लेविड ओनली ऑन वन साइड. एक ही पार्टी देगी, या तो सेलर देगा या बायर देगा, नॉट बाय बोथ एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स वेयर स्टैम्प ड्यूटी शैल बी बोर्न बाय बोथ पार्टीज इन इक्वल प्रोपोर्शंस. तो पहले क्या था? दोनों पार्टीज देती थी, बायर भी सेलर भी. अब दोनों में से एक ही देंगी, दोनों नहीं देंगी, एक्सेप्ट अगर ये डिसाइड होता है कि दोनों इक्वल प्रोपोर्शंस में देंगी तो वो अलग चीज है. एंड कलेक्टिंग एजेंट स्टॉक एक्सचेंजेस हो सकते हैं या ऑथोराइज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो सकती है एंड डिपॉजिटरीज हो सकते हैं, राइट? फॉर ऑल द एक्सचेंज बेस्ड सेकेंडरी market transactions and securities, stock exchanges shall collect stamp duty. stock exchanges वैसे तो collect करेंगी जो securities में secondary market transactions हो रही है. and for off market transactions and initial issue के लिए उस केस में डीमैट फॉर्म में तो डिपॉजिटरीज कलेक्ट करेगी, राइट? तो जो भी एक्सचेंज के बेस पे सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस हो रही है तो स्टॉक एक्सचेंज कलेक्ट करेंगी स्टैम्प ड्यूटी, और ऑफ मार्केट एंड इनिशियल के केस में डिपॉजिटरीज कलेक्ट करेगी. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करेगी who will be the CCIL under the jurisdiction of RBI and registrars to an issue or share transfer agent as an collecting agent. The objective to bring OTC derivative transactions reported to CCIL and physical space is actually
to in mutual funds handled through RTI and STAs under the ambit of stamp duty regime to avoid any tax arbitration. आगे चल के कोई टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट ना हो जाए, इसलिए ये सारी चीजें और इसलिए ये सारी चीजें जो है वो भी की जा रही है, डिस्क्लोज भी की जा रही है. द कलेक्टिंग एजेंट्स विद इन 3 weeks फ्रॉम द एंड ऑफ ईच मंथ, हर 3 मंथ के खत्म होने के अगले 3 weeks में उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को सारा पैसा जो है जो भी कलेक्ट किया वो दे देना है. वेयर द रेजिडेंस ऑफ द बायर इज लोकेटेड, अगर तो जहां उस स्टेट गवर्नमेंट को जहां बायर का रेजिडेंस है, अगर बायर जो है वो आउटसाइड इंडिया है देन उस स्टेट गवर्नमेंट को जहां रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर या ब्रोकर का रेजिडेंस है, और अगर कोई ट्रेडिंग मेंबर भी नहीं है तो फिर वहां पे जहां पार्टिसिपेंट का रजिस्टर्ड ऑफिस है. दिस इज इंपॉर्टेंट कि स्टैंप ड्यूटी जब कलेक्ट कर लिए एवरी मंथ एंड के 3 weeks के अंदर अंदर आपने ये डिपॉजिट करनी है स्टेट गवर्नमेंट को, उस स्टेट गवर्नमेंट को जहां पे बायर का रेजिडेंस है. अगर बायर आउटसाइड इंडिया रहता है तो जहां पे ट्रेडिंग मेंबर का रेजिडेंट है या जो आपका ब्रोकर है उसका रेजिडेंस है. अगर वो भी नहीं है, कोई ट्रेडिंग मेंबर भी नहीं है, तो जहां पे पार्टिसिपेंट है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट गवर्नमेंट को दे दो. द कलेक्टिंग एजेंट शैल ट्रांसफर द कलेक्टेड स्टैम्प ड्यूटी इन अकाउंट ऑफ कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट विद आरबीआई और एनी कमर्शियल बैंक एज इन्फॉर्म, तो वो ट्रांसफर करनी है. द कलेक्टिंग एजेंट शैल डिडक्ट, अब उसका क्या फायदा होता है, तो कलेक्टिंग एजेंट 0.2% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी अपने लिए डिडक्ट कर लेता है. फॉर मेनी सेगमेंट्स देयर इज रिडक्शन इन ड्यूटी. फॉर एग्जांपल काफी जगह पे रिडक्शन इन ड्यूटी भी हुई है, जैसे कि रेट प्रिस्क्राइब्ड इज लोअर फॉर इशू ऑफ इक्विटी और डिबेंचर्स एंड फॉर ट्रांसफर टू एड एंड टू प्रमोट, ताकि वो बढ़ा सके तो वहां पे थोड़ा कम कर दिया है. फॉर इक्विटी कैश सेगमेंट ट्रेडिंग एंड ऑप्शन, सिंस द रेट्स आर चार्ज ओनली ऑन वन साइड इन लाइन विद द न्यू स्कीम, इट कैन बी स्टेटेड, क्योंकि अब एक ही साइड से पैसा लिया जा रहा है तो ओवरऑल टैक्स बर्डन भी कम हो गया. सेकेंडरी मार्केट transfer of instruments which are traded with differences in few points like interest rate, currency derivatives, they are being charged on a very lower rates from the जितने अभी हैं उससे वो काफी कम हो गए. No stamp duty shall be chargeable in respect of instruments of transaction in stock exchanges and depositories that are established in any international financial services center set up under the SEZ, वहां पे कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती. टैक्स आर्बिट्रेशन जो है वो अवॉइड इसलिए की गई है बाय प्रोवाइडिंग सेम रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी फॉर इशू, री इशू, सेल, ट्रांसफर, जो भी हो रहा है वो उस पे सेम स्टैम्प ड्यूटी लगे ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो. म्यूचुअल फंड्स बीइंग डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज वर सपोज्ड टू हैव बीन पेइंग द ड्यूटी एज पर वेरियस स्टेट एक्ट्स. All mutual funds are thus liable to स्टैम्प ड्यूटी एंड न्यू सिस्टम स्टैंडर्ड. तो पहले क्या होता है वो स्टेट एक्ट के हिसाब से चलते थे, अब जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन आ गई है. तो रैशनलाइजेशन से काफी चीजें जो है इंप्रूव हुई हैं. यू कैन गिव इट अ गुड रीड ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे कैसे इसमें चेंजेस आए हैं. राइट, एंड आफ्टर दिस वी मूव टू लेसन नंबर 16 विच इज आरटीआई. आरटीआई में आई थिंक Now we move to lesson number 16 which is RTI. तो पहला केस लॉ है HN मालविया वर्सेस CPIO, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेडिंग. तो यहाँ पे क्या हुआ, RTI में एपेलेंट ने इंफॉर्मेशन सीख की सीनियरिटी ऑफ एम्प्लॉइज की. तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने सेकंड अपील में ये डिसाइड किया, कमीशन बेस्ड ऑन पेरिसल ऑफ द फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड ऑब्जर्व्स दैट द इंफॉर्मेशन सॉर्ट, जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है RTI में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मेयर कंजेक्चर एंड इवन फ्यूचरिस्टिक क्वेरी. राइट, तो वो ये कह रहे हैं कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर्ली बताया नहीं जा रहा और जो क्वेरी है वो फ्यूचरिस्टिक है. राइट, सो येट सीपीआई एंड एफएए फर्स्ट अपील एपेलेंट हैव ट्राइड टू फैसिलिटेट, उन्होंने हेल्प करने की पूरी कोशिश की इन कीपिंग विद द स्पिरिट. देखो आरटीआई का स्पिरिट क्या है कि अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो दो. दे सेड हमने पूरी कोशिश की. द एपेलेंट शैल नो दैट आउटस्ट्रेचिंग द इंटरप्रिटेशन टू इंक्लूड डिडक्शंस एंड इन्फरेंसेस टू बी ड्रॉन बाय सीपीआईओ इज अनवारंटेड. अगर आप ये सोचो कि वो खुद से सोचे, वो और इंफॉर्मेशन दे, वो इंटरप्रेट करे हमारी बात को, वो बताए, ऐसा नहीं होता. राइट, दिस इज नॉट देयर. आपका मोटिव वहीं खत्म हो जाता है. जब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन मिल गई, बाकी काम आपका है. राइट, देश से कि हमने इसको पूरा हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये सोचना कि ये इंक्लूड करेंगे, जो मैंने नहीं भी मांगा वो भी ये मुझे दे दें, ये इन्फर भी करें, दैट इज नॉट पॉसिबल एज इट कास्ट इमेंस प्रेशर. वो तो फिर यही करते रहेंगे. एक तो आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन का कॉपी कराते हैं, कलेक्ट करते हैं, आपको देते, अब वो इंटरप्रेट भी करें, उसको इन्फर भी करें, वो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी. सो to ensure that they provide the correct deduction or inference to avoid being able to penal provision. तो उन्हें तो यही लगता रहेगा अगर प्रॉपरली हम इन्फर नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो हम पे पेनल्टी लग जाएगी, तो ये सही नहीं है. राइट, तो उन्होंने यही बोला कि उसने
उसकी जो क्वेरी है वो एक तो मेयर कंजेक्चर है, ठीक है, एंड दूसरी वो फ्यूचरिस्टिक है। तो ये ड्यूटी सीपीआईओ की नहीं है। उन्होंने बोला कि सीपीआईओ ने और एफएए ने सबने ट्राई किया कि इसको अच्छे से इंफॉर्मेशन मिले, इसको हेल्प भी किया, लेकिन ये बोलना कि ये उसको इन्फर भी करे, ये मुझे उसे एक्सप्लेन भी करे, वो चीजें नहीं हो सकती, बिकॉज उससे और ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि भाई हम नहीं बताएंगे तो हम पे पेनल्टी लग जाएगी। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। राइट। द सेकंड इज मिस्टर राजकुमार वर्सेस सीपीआईओ गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। तो कंप्लेनेंट ने आरटीआई एप्लीकेशन में मांगा सैलरी रिकॉर्ड्स एंड डीए इम्प्लीमेंटेशन। द सीपीआईओ furnished a point-wise reply to the complainant. He was dissatisfied with the reply received from PIO. The complainant filed a first appeal, which was not adjudicated by the first appellant. Therefore, he went to the commission. So the complainant remained silent during hearing despite notice. The respondent present during the hearing submitted a suitable response in accordance with the RTI had already been furnished to the complainant. The respondent further stated that the information sought in point 01 will be furnished in due course. So they said we have provided all the information, बस the information जो 101 point में ना वो हम बाद में दे देंगे. Central Information Commission ने क्या बोला? They decided, keeping in view the facts, the submissions made by respondent after perusal of the documents available on the record, the commission directs the respondent to furnish complete and correct information to the complainant in accordance with the spirit of transparency and accountability. उन्होंने बोला पूरी information दो, ठीक है, ये नहीं आधी अधूरी देके ये हम बाद में दे देंगे, बाद में कौन किसी को पूछ रहा है, राइट। सो कमिश्नर सेड कि आपने इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्लेनेंट ने मांगी है पॉइंट वाइज वो सारी प्रोवाइड करो ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे विद इन अ पीरियड ऑफ 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ दिस ऑर्डर अंडर द इंटीमेशन टू द कमीशन, राइट। उन्होंने बोला कि 21 days के अंदर अंदर सारी करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है आपको कंप्लेनेंट को प्रोवाइड करनी है। एंड फर्दर ही कॉशंस द सीपीआईओ टू बी more careful in future while dealing with the RTI application so that no such lapse would recur and the provisions are complied within letter and spirit. So that is also important that when anybody is asking for the information, you should give it completely, you should give it correctly. ऐसा नहीं है for the sake of it you are giving some information and some you are leaving कि बाद में दे देंगे। तो तभी उन्होंने warn किया और ये कहा कि 21 days के अंदर अंदर सारी इंफॉर्मेशन सप्लाई करो और आगे चल के यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से आप डील कर रहे हो और सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी है ताकि आरटीआई की एप्लीकेशन अच्छे से फुलफिल हो पाएंगे। तो ये दो ही केस लॉज हैं आरटीआई में। मूविंग फर्दर टू आईटी 2000, तो इसमें कुछ रूल्स इंसर्ट हुए हैं न्यू रिलेटिंग टू रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इंफॉर्मेशन। डाटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन इन टुडेज वर्ल्ड दोनों बहुत जरूरी है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था तो एक हमने लैंडमार्क केस किया था, हिस्टोरिक जजमेंट पढ़ी थी के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जहां ये पढ़ा था कि जो राइट टू प्राइवेसी है अब वो फंडामेंटल राइट बन गया है। तो इसी के चलते अब कुछ रूल्स आए हैं एसपीडीआई यानी कि सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इंफॉर्मेशन रूल्स, व्हिच स्टेट्स दैट इट अप्लाइज टू बॉडी कॉर्पोरेट्स और एनी पर्सन हुज लोकेटेड इन इंडिया। उसके ऊपर ये जो रूल्स है वो अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहली चीज कि एक्चुअली कौन सा डाटा होता है जो पर्सनल एंड सेंसिटिव में हम कंसिडर कर सकते हैं। तो कौन कौन से डाटा है? पासवर्ड्स है, बैंक अकाउंट डिटेल्स है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स है, प्रेजेंट एंड पास्ट हेल्थ रिकॉर्ड्स है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड बायोमेट्रिक डाटा है। सो एन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर इज अ पर्सन, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो पर्सन है जो आपको इन्फॉर्मेशन अपने पर्सनल डाटा बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एंड दिस इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी कलेक्टेड विदाउट द प्रोवाइडर्स कॉन्सेंट एंड ही और शी हैज टू ऑब्टेन from giving the consent and can withdraw the consent. So उससे पूछे बिना बॉडी कॉर्पोरेट फर्दर डाटा सर्कुलेट नहीं कर सकती और उसके पास पूरा राइट है अपना कॉन्सेंट वापस लेने का और विड्रॉ करने का। तो सबसे पहले आती है प्राइवेसी पॉलिसी। हर बॉडी कॉर्पोरेट के पास प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए ऑन देयर वेबसाइट व्हिच इज इजीली एक्सेसिबल, राइट। हर वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें पता हो कि क्या पर्सनल पर्पस या सेंसिटिव पर्सनल कलेक्टिव डाटा है, आप किस तरीके से उसे प्रिजर्व करते हो, वो होनी चाहिए। सेकेंड इज कॉन्सेंट। बिफोर गिविंग इट टू एनीवन कॉन्सेंट लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी का भी सेंसिटिव पर्सनल डाटा आगे शेयर नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव राइट ऑफ प्राइवेसी। कलेक्शन
लिमिटेशन, अब वो सिर्फ वही डाटा भी आप कलेक्ट कर सकते हो, सेंसिटिव पर्सन डाटा, जो कि लॉफुल पर्पस के लिए आपको चाहिए और नेसेसरी है, उसके अलावा नहीं. Notice requires while collecting information directly from an individual, the body corporate must provide the following information. तो जब आप ले रहे हो information, क्या क्या बातें आपको बतानी है. The fact that information is being collected, purpose, क्यों collect कर रहे हो, intended recipients कौन होंगे, एजेंसी का नाम क्या है जो कलेक्ट कर रही है, एजेंसी का नाम क्या है जो रिटेन करेगी, ये सारी डिटेल्स भी नोटिस में देनी जरूरी है जब आप किसी का भी पर्सनल डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हो. रिटेंशन लिमिटेशन, वो डिपेंड करता है, जब तक आपको जरूरत है तब तक रिटेन करो, उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय कर दो. पर्पस लिमिटेशन, अगर किसी पर्पस के लिए लिया है तो जब पर्पस सॉल्व हो जाएगा तब उसका यूज जो है वो खत्म हो जाता है. राइट ऑफ एक्सेस एंड करेक्ट, तो जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, उसके पास एक्सेस होना चाहिए कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को, अगर कुछ गलत है तो उसे करेक्ट कर सके, उसे ऑल्टर कर सके. राइट टू ऑप्ट आउट एंड विड्रॉ कॉन्सेंट, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ऑप्ट आउट कर सकता है कि मुझे अपना डाटा आपको प्रोवाइड नहीं करना है, और अपनी कॉन्सेंट जो है वो विड्रॉ कर सकता है. ग्रीवेंस ऑफिसर का पोजीशन होना चाहिए कि कंपनी किसी को डेजिग्नेट करे ग्रीवेंस ऑफिसर, ताकि कोई भी चीज जो प्रॉब्लमैटिक है या जो पोस्ट हो रही है उस केस में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे कॉन्टैक्ट कर सके. डिस्क्लोजर विद कॉन्सेंट, प्रोहिबिशन ऑन पब्लिशिंग एंड फर्दर डिस्क्लोजर. सो अगर आप कहीं पे भी डिस्क्लोज करते हो सेंसिटिव पर्सनल डाटा टू एनी थर्ड पर्सन, एक्सेप्ट इन केस ऑफ विद गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, उसे छोड़ के तो आपको जो है रिटन कॉन्सेंट लेना पड़ेगा. ऑल्सो द बॉडी कॉर्पोरेट और एनी पर्सन ऑन इट्स बिहाफ शैल नॉट पब्लिश, आगे उसे पब्लिश भी नहीं करना बिना उसके कॉन्सेंट के. रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसफर ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डाटा, अगर any corporate may transfer it, only if the country ensures that the same level of protection will be there for there. तो अगर आप ट्रांसफर करते हो किसी और जुरिस्डिक्शन में तो ये कंफर्मेशन आपको देना पड़ेगा कि वहां पे भी सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उसे मिलेगा. सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, रूल 8 requires that body corporate must secure information in accordance with ISO 27001 स्टैंडर्ड और एनी अदर बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से ही सिक्योर किया जा रही है आपकी इंफॉर्मेशन. राइट, तो यहां तक आता है फर्स्ट जो टॉपिक है दैट रिलेट्स टू द रूल्स, एसपीडीआई रूल्स. तो ये आप एक बार रीड आउट कर लो. इट्स नॉट लाइक वेरी टफ और वेरी आई वुड से डिफिकल्ट टू रिमेंबर और टेक्निकल, बेसिक चीजें हैं, बट हाँ जैसे आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल डाटा क्या है, प्राइवेसी नोटिस, ये सारी चीजें. तो ये यहाँ पे ओके. सेकेंड चीज जो आई थी वो है डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ डाटा प्रोटेक्शन. तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट बिल अभी तो फॉर्मुलेट किया है ऑन द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022. इस बिल का पर्पस ये है टू प्रोवाइड द प्रोसीजर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा, कि पर्सनल डाटा प्रोसेस कैसे किया जाता है. द बिल वाज एस्टैब्लिश्ड The bill will establish the legal framework on protection of personal data, उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है. And the bill aims to protect personal data in a manner that it recognizes the right of individuals. ये हमारा राइट है कि वो प्रोटेक्ट किया जाए, तो इसीलिए ये बिल जो है एज अ ड्राफ्ट बिल अभी इंट्रोड्यूस हुआ है. केस लॉ इसमें जो है it's Sayyid Asifuddin and others versus the state of Andhra Pradesh and others. So in this case, it was contended that insofar as the offence under Section 65 of IT Act is concerned, a telephone handset is not a computer nor a computer system containing a computer program. तो जो telephone handset होता है ना तो वो computer system है ना तो वो computer program है. और so it was observed by the court that essential functions in the use of cell phone which is performed by MTSO is the central antenna, central transmitter and other transmitters in the areas well coordinated with the cell phone functions in a fraction of second. All this is made possible only by a computer which simultaneously receives, analyzes and distributes data by way of sending and receiving radio और electric signals. लेकिन अगर हम सेल फोन की बात करें तो उस केस में जो भी सारी प्रोसीडिंग्स हो रही है वो कंप्यूटर बेस्ड ही हो रही है. राइट, सो इन दिस केस they said that whatever the offense of section 65 is there, the simple telephone handset is not a computer. Alternatively they say कि अगर कोई law absent है requiring the maintenance of computers सोर्स कोड, तो उस केस में जो भी चीजें कंसील की जा रही हैं, डिस्ट्रॉय की जा रही हैं, उस चीज में जब कंप्यूटर सोर्स कोड ही नहीं है तो हैकिंग इज जस्ट कंप्लीटली एब्सेंट. फर्दर दे सेड अगर हम सेल फोन की बात करें तो उस केस में जो चीजें हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटेड है, जो भी डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो सिग्नल्स के थ्रू हो रहा है, वो कंप्यूटर से ही
पॉसिबल है, राइट? बट जो टेलीफोन हैंडसेट है वो कंप्यूटर नहीं है, ना कंप्यूटर है, ना कंप्यूटर प्रोग्राम है, ना कंप्यूटर सिस्टम है, राइट? एंड विद दिस वी एंड द पार्ट बी ऑफ JIGL अमेंडमेंट्स। आई होप कि आपको समझ आ गई हो तो लाइक कर देना वीडियो, एंड डू कमेंट बिलो एनी अदर academic videos that you want. Of course I also have a list of it, but I would love to hear from you. अगर आप कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो you definitely can, and do follow me on Instagram for all the official content, as in on CS Jasprit Dhanjal. I give you lots of strategies, tips and tricks there as well, and I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, keep the preparations on. Bye bye.